Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in second lecture. Why an atom is always neutral in nature. Okay, this is our topic. We will try to understand why an atom is always neutral. Uh, and we know that an atom is neutral in nature. As we know that there are number of protons and neutrons are present in the nucleus, while electrons are revolved around the nucleus. And we also know that a number of protons in an atom, a number of protons in the nucleus always equal to the number of electrons around the nucleus in shells, right? किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं यानी सेम होते हैं since both electron and a proton have opposite charges, that is electron exhibit negative charge and a proton exhibit positive charge, right? And both are equal, so therefore they cancel the charges each other and the overall atom become neutral in nature, राइट। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की चार्जेस को कैंसल करते हैं और कैंसल करने की वजह से नेट चार्ज जो है वो जीरो आती है। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम। Sodium atom, atomic number of sodium is 11. It means that there is 11 protons, right? And we already know that number of protons and the number of electrons in an atom is always equal. So there are 11 protons with positive charge and 11 electrons with negative charge. Then in sodium atom, so electron plus proton, there is a negative 11 plus 11 is equal to 0. They cancel each other. 11, negative 11 and positive 11, they cancel each other. So the sodium atom become neutral, electrically neutral in nature. तो ये एक दूसरे की चार्जेस को कैंसल करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर आपको हमारी ये लेक्चर समझ में आ गई है तो कैन यू आंसर। नाउ आई एम आस्किंग यू, व्हेन सोडियम विल फॉर्म एन आयन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ये बता दें कि सोडियम के ऊपर आयन किस वक्त बनेगा। आंसर इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हमारी ये लेक्चर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल, contact with us with this email, or join the Scholar Academy of Excellence Gilgit, which is exist in the Smart School building near DC office, Homar Gilgit. Thank you very much.